Hello dear student, today we are going to solve practice set 41. Here 5 examples are given. We solve these examples one by one. Here first example is given as if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be dash. We have to find out here rate of interest, that is R. यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें. प्रिंसिपल इज ₹1700. देन टाइम 2 years. इंटरेस्ट is ₹340 and we have to find out rate of interest, that is R. We know the formula. I is equal to interest is equal to P into R into T upon 100. यहाँ पे जो वैल्यू हमें मालूम है वो हम प्लेस करेंगे. That is interest 340, principal is 1700 into R into time T, that is 2 upon 100. So 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 340 इज इक्वल टू 17 इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 340 is equal to 17 into 2, that is 34 into R. So 340 upon 34 is equal to R. So यहाँ पे हमें R की वैल्यू मिलती है 10. R is equal to 10%. That is option 4 is the correct answer. So यहाँ पे हम लिखेंगे the correct alternative is option 4. Our second example is if the interest on 3000 rupees is 600 rupees. मतलब 3000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है 600 रुपीज एट ए सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स. व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन. अगर उसी हिसाब से इंटरेस्ट समझो 1500 है तो वहां पे प्रिंसिपल कितना होगा ये हमें निकालना है. सो वी नो द फार्मूला फॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. यहाँ पे कंडीशन दी हुई है. हियर I इज इक्वल टू 600 रुपीज when principal is ₹3000. And second condition, I is, that is I1 and I2 is equal to what when principal is ₹1500. Here rate and time remain the same. So here we write as I1 upon I2 is equal to P1 upon P2. क्योंकि यहाँ पे R और T दोनों रिमेन सेम, मतलब दोनों कंडीशन में सेम है. I1
सो यहाँ पे हमने लिखा I1 इज इक्वल टू P1 और I2 इज इक्वल टू P2 और दोनों का रेशियो लिया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 अपॉन I2 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1500। सो I2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो I2 इंटू 3000 इज इक्वल टू 600 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 600 इंटू 1500। सो I2 इज इक्वल टू 600 इंटू 1500 अपॉन 3000। डिवीजन करेंगे, यहाँ पे आएगा 600 इंटू 5 दैट इज 3000 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 300। सो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू आंसर मिलता है हमें 300 रुपीज 300। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 300। So here the correct alternative is, that is option 2, sorry, option 1. Our next example is Javed deposited rupees 12,000 at 9 PCPA in a bank for some years. जावेद ने बैंक में 12,000 रुपये जमा किए हैं एट द रेट 9 PCPA फॉर सम ईयर। व्हाट इंटरेस्ट विल ही गेट एवरी ईयर? मुझे उसे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव ऑल टुगेदर रुपीज 7,400। उसे कुछ समय के बाद उसे 17,400 रुपीज मिलते हैं। दैट इज अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही डिपॉजिट हिज मनी? तो उसे वो 12,000 रुपये कितने साल तक बैंक में रखने पड़ेंगे, तभी उसे कितना अमाउंट मिलता है 7,400। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल टाइम, दैट इज कितने साल तक उसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसे हर साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है। सो हियर we write the given things. Given is principal is equal to rupees 12,000. Then rate of interest 9 PCPA and फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम, दैट इज 1 ईयर। और यहाँ पे अमाउंट हमें दिए हुए है रुपीज 17,400। ठीक है, अभी फर्स्ट वो फाइंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। फाइंड इंटरेस्ट I for 1 year. So I is equal to फार्मूला हमें मालूम है P into R into T upon 100. So here we write as I is equal to 12,000 into 9 into T 1 upon 100 is equal to I. So यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। So we write here as 120 into 9 into 1, that is उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 1,080 रुपीज।
सो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिला है फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज ₹1080। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। क्या मिला हमें? ₹1080। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दैट इज A इज इक्वल टू 17,400। फार्मूला लिखेंगे अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A माइनस P। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट 17,400 minus principal 12,000. So here we get total interest is ₹5,400. So यहाँ पे I1 1080, तो T1 क्या आएगा? 1 ईयर। ठीक है। अगर I2 हम लेते हैं 5,400, तो उसके हिसाब से T2 भी अलग आएगा। यहाँ पे हम रेशो लेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। पुट द वैल्यू, T1 की वैल्यू है 1, T2 हमें मालूम नहीं है। I1 1080 रुपीज़, I2 5,400 रुपीज़। T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T2 इंटू 1080 इज इक्वल टू 1 इंटू 5,400। सो T2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5,400 अपॉन 1080 is equal to 5,400 upon 1,080. Their answer is 5. So यहाँ पे हम लिखेंगे T2 is equal to 5. So जावेद को वो पैसा 5 साल तक बैंक में रखना पड़ेगा, तभी उसे 7,400 रुपीज मिल सकेंगे। जावेद विल get ₹1,080 as interest from bank every year if Javed deposited the amount that is principal 12,000 रुपीज, तो कितने साल तक रखना पड़ेगा उसे? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक वो बैंक में रखेगा, तभी उसे उतना इंटरेस्ट मिल सकेगा। Our next example is Latapen borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid ₹10,250 as total interest, how much money had she borrowed? उसने बैंक से कितने पैसे लिए हैं? At the rate 10 PCPA for 2.5 years to start a cottage industry. उसे कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करने के लिए उसने बैंक से कितने पैसे लिए हैं, और उसने जो ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है बैंक को, वो है 10,250 एज द टोटल इंटरेस्ट। हाउ मच
मनी, उसने बैंक से कितना लोन लिया है हमें निकालना है। हियर लोन कितना लिया है वो हमें निकालना है। I2 that is rupees 10,250. Rate of interest 10 PCPA and time is 2.5 years. यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है, दैट इज P2. लेट द प्रिंसिपल सपोज करेंगे हम B ₹100. Find the interest on ₹100, that is P1. P1 की वैल्यू हम निकालनी है। सो यहाँ पे I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिया है 100, R that is 10 and time is 2.5 years upon 100. So यहाँ पे 100 कैंसिल होता है। So 10 into 2.5 that is 5 upon 2. तो उसका आंसर आता है 10 into 5 that is 50 upon 2 that is 25 rupees 25, that is the interest for 100 rupees. Interest on principal कितना सपोज किया था हमने 100 rupees is ₹25. 100 rupees के ऊपर हमें 25 rupees इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Now take the ratio. I1 upon I2 is equal to P1 upon P2. यहाँ पे I1 फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा मिला था हमें 25 rupees, I2 10,250 and प्रिंसिपल P1 is 100. P2 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 25 इंटू P2 is equal to 100 into 10,250. So PT is equal to 100 into 10,250 upon 25 is equal to 25 से 40 को 400 को 100 को डिवाइड किया तो 4. So 4 into 10,250 that is rupees 41,000. So लताबेन ने बैंक से कितना लोन लिया? फिर लताबेन had borrowed rupees 41,000 from the bank.